सीए स्टूडेंट हूँ यार। फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए इंटर के बोथ ग्रुप्स क्लियर हो ही जाते। कॉस्टिंग और लॉ में तो एग्जामिशन तक था, बट यार ऑडिट में रह गया। मेरा तो रैंक आने वाला था, बट ऑडिट ने स्कोर डाउन कर दिया। सो ये एक डर, ऑडिट, जो हर सीए स्टूडेंट के मन में रहता है, उस सब्जेक्ट में आई हैव स्कोर्ड 96 on 100. Hey everyone, I'm Pranjal Agarwal. I am an All India rank 15 in CA Inter May 24, and the best part is that I have scored 96 on 100 in audit, द सब्जेक्ट जिसको बहुत सारे लोग राइट ऑफ कर देते हैं। इस सब्जेक्ट में 70 से ऊपर स्कोर करना इज़ अ वेरी बिग अचीवमेंट। सो ऐसे सब्जेक्ट में मैंने ऐसा क्या किया था, क्या स्ट्रैटेजी अपनाई थी, कैसे पढ़ा था, कब पढ़ा था, पेपर को प्रेजेंट कैसे किया था, जिस वजह से मेरा इतना जेगेंटिक स्कोर आया है। आफ्टर अ ईयर लॉन्ग हाइबरनेशन आई एम फाइनली मेकिंग दिस वीडियो बिकॉज आई वॉज रिसीविंग ऑल दीज कमेंट्स फ्रॉम यू ऑल. So in this video, I am going to try to cover all the frequently asked questions, as many as possible. At the same time, I'll try to keep it short because I know you need that extra time to revise one extra question of audit. So, these are all the points that we are going to cover in today's video, which will help us in acing audit. So, the first and the most asked question was कि दीदी आप कितने घंटे पढ़ते हो and what was your schedule both during attending classes and while revision. So, let me break down my complete schedule for you. कितने घंटे पढ़ते थे इसका जवाब मैं दूंगी। सबसे पहले मैं अपना पूरा रूटीन ब्रेक डाउन करती हूँ ड्यूरिंग माई सीए इंटरमीडिएट स्टडी पीरियड। सो सबसे पहले जो हमारा सिलेबस कंप्लीशन फेज होता है, सो उस टाइम पे आई यूज टू टेक लेक्चर्स फॉर ऑडिट। सो ऑडिट जो होता है जनरली वी स्टार्ट लेट एज कम्पेयर टू प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो कि अकाउंट्स और कॉस्टिंग हो गए। सो अराउंड दिसंबर में आई स्टार्टेड ऑडिट एंड मेरा ऑडिट का सिलेबस भी थोड़ा लेट कंप्लीट हुआ था, मे बी अराउंड मार्च मिड तक गया था। सो ड्यूरिंग दैट पीरियड 1.5 आवर्स के अराउंड मेरे क्लासेस होते थे। सो आफ्टर क्लासेस जो भी हमने क्लास में पढ़ा है, इट्स ऑलवेज बेटर टू एटलीस्ट रिवाइज सम पार्ट ऑफ इट। सो 15-20 minutes डेली एडिशनल इफ यू स्पेंड ऑन रिवाइजिंग दैट एंड प्लस अगर आपके जैसे इन आर क्लास वी यूज टू हैव tests in 1 or 2 week for 2 or 3 chapters. So for that also around 30 minutes you may spend before the test, 30 to 35 minutes if you revise daily. And revision के time पे तो so revision phase is the most crucial phase. So last 1.5 जो last 1.5 month होता है before exam, that is the most crucial phase because इस पीरियड में ऑडिट जैसे सब्जेक्ट होते हैं वो सबसे ज़्यादा डिमांडिंग होते हैं एंड उनको प्रायोरिटाइज करना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली बिकॉज आई फाउंड ऑडिट वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ऑडिट में देर इज़ अ पार्ट दैट वेयर यू हैव टू लर्न थिंग्स, यू हैव टू रिमेंबर थिंग्स. So I made sure that I spend at least 2 hours on an average every single day during the last 1 or 1.5 months, especially on audit. So मैंने क्या रूटीन बनाया था, द मॉर्निंग वाला जो स्लॉट था आई रिजर्व्ड इट फॉर ऑडिट. सो व्हाट स्ट्रैटेजी आई फॉलोड कि मैं सुबह सुबह ऊपर छत पे जाके आई यूज टू रिवाइज ऑडिट. तो फॉर मी मॉर्निंग वॉज दैट टाइम जहाँ पे मैं चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद कर पाती थी एंड रिटेन कर पाती थी. सो सुबह सुबह आई यूज टू गो ऊपर छत पे एंड देन एक इफ़ यू कैन ऑल्सो डू द सेम, आई थिंक इट विल बी वेरी हेल्पफुल. अपना फ़ोन मत लेके जाना, ऊपर जाना शांति से सुबह सुबह. यू कीप आउट सम टाइम फॉर ऑडिट बिकॉज ऑडिट इज़ दैट सब्जेक्ट जहाँ पे आपको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज for other subjects, practical subjects like accounts and accounts हो गया and then costing हो गया, दिन में you will feel someday कि चलो आज थोड़ा costing करते हैं, आज थोड़ा मन कर रहा है, let's solve some sums, let's do some accounts. But audit एक ऐसा subject है जिसके लिए आपको ऐसा कभी feel नहीं होगा कि चलो आज उठ के audit revise करते हैं. So for audit, that discipline, maintaining that discipline is very necessary. So make sure that you keep that as a part of your schedule. It's I'm not saying कि आप पूरा 9 महीना
डेली 2-2 घंटा या 3-3 घंटा यू रिमूव फॉर ऑडिट, ऑब्वियसली सिलेबस क्लासेस कंप्लीट करने के लिए आपको जो मिलेगा, apart from that, at least during revision you will have to keep 1.5 or 2 hours for audit if you are targeting to score 70 plus, and even for passing at least 1 hour daily for audit. I think that will be more helpful rather than spending एक साथ पूरा 12-12 घंटे doing some marathon and doing all those stuff. I think that would be better if you can maintain that consistency. Yes, and the next part is revision. So this is also very often asked. मेरे को बहुत लोग पूछते हैं कि कितने revisions किए थे. भाई कितने revision? I would say around 1.5 revisions मेरे हो गए थे. Now let me explain कि मैं ये 1.5 revisions कैसे बता रही हूँ. So सबसे पहले जब मैंने syllabus complete हुआ है, that is one. Okay, obviously that is not what you call revision. So second time जब हमारे 2-3 चैप्टर्स के क्लबों के टेस्ट होते थे, सो एट दैट टाइम आई यूज टू डू सम रिविजन, सो यू कैन काउंट दैट एज वन. एंड मॉक टेस्ट जो फुल सिलेबस के, सो आई वुड सजेस्ट कि एटलीस्ट वन मॉक टेस्ट एवरीबडी शुड गिव फॉर full syllabus, so that would also count as writing practice, which is very important for audit. And so before mock test I could not do full revision because हमारा सिलेबस कंप्लीट ही हो रहा था. इन द मीनवाइल मॉक टेस्ट भी थे, सो इन दैट आई कुड डू जस्ट 1 or 2 chapters. एंड बिफोर एग्जाम ऑब्वियसली यू विल हैव टू डू one complete chapter. The you will have to go through the entire syllabus one. So जो बीच के टेस्ट थे एंड बिफोर एग्जाम, सो टोटल मिला के 1.5 revisions I did, but this 1.5 was something which was very 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 thorough. So it is always quality over quantity. So if you are doing even 1 or 1.5 revision thoroughly and completely, so that would always be better than doing 3-4 revision ऐसे ऊपर ऊपर से. So number of revisions does not matter that much. The quality of revision, yeah, that matters. So उससे we come to our next practice with next question, which is writing practice. So writing practice, बहुत लोगों से हमने सुना होगा कि writing practice is important for subject like audit apart from learning. So writing practice करनी है ये तो पता है. So इसमें what is important is to know is what is regarded as a good writing practice. So if आप पढ़ते पढ़ते चैप्टर पढ़ते पढ़ते you are making some concise notes or something by seeing that already that very content which you have studied, so I don't think that will be counted as a writing practice. I don't think that is any useful because I never did that. What was writing practice for me was writing tests and writing mocks and all those. Mainly that is considered as a good writing practice from what I think, because आपने रिवाइज किया है, आपने लर्न किया है, बट जब तक आप टेस्ट नहीं लिखोगे यू वोंट गेट दैट कॉन्फिडेंस कि आपको कितना आ रहा है. प्लस रीविजिटिंग दोज टेस्ट, ऐसा नहीं कि सिर्फ टेस्ट देके छोड़ दिया. एक बार टेस्ट देने के बाद यू हैव टू रिविजिट दी आंसर्स कि आपने कितने पॉइंट्स कवर किए और एडिशनल पॉइंट्स आप क्या कवर कर सकते थे. सो आई थिंक दैट इज रिगार्डेड एज अ गुड राइटिंग प्रैक्टिस. एंड वंस यू हैव given enough tests, then obviously you will feel confident to appear in this exams and question paper देख के you will have that confidence that okay, I can at least put up something on that paper. बहुत 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 टेस्ट भी नहीं देना है that you have no time to go through your entire syllabus and आप सिर्फ बैठ के टेस्ट दे रहे हो. Obviously that is also not good. First priority should always be covering up syllabus and doing revision, and then with that obviously you can write at least one full mock test. I think that is more than enough for audit. And chapter wise test 3 to 4, I think that will be very very good, sufficient. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज कीवर्ड्स. ना अब ये तो हम सबको पता है कि ऑडिट में हमें कीवर्ड्स लिखने पे मार्क्स मिलते हैं, बट कौन सा कीवर्ड कहाँ लिखना है, हाउ वुड वी नो कि विच इज द कीवर्ड, एंड ये वाले कीवर्ड को देख के आईसीएआई मार्क देगा कि हमें कैसे पता चलेगा. सो फॉर दैट आई हैव ब्रॉट इन वन स्मॉल एग्जाम्पल हियर. सो मैं आपको दिखाऊंगी कि मेरा एक टेस्ट पेपर था. सो एज आई सेड कि ड्यूरिंग माई syllabus completion and post syllabus completion, so my coaching used to take
मल्टीपल टेस्ट, दो तीन चैप्टर खत्म होने के बाद दे यूज टू टेक दिस टेस्ट सिंस आई वाज अ ऑनलाइन स्टूडेंट. सो आई यूज टू राइट दिस टेस्ट एंड देन सेंड स्कैन कॉपीज टू देम, जिसको ये लोग ऐसे चेक करके देते थे. सो फॉर दैट दिस इज वन ऑफ माय टेस्ट पेपर्स जो मैंने दिया था. इफ आपने ऑलरेडी अपनी ऑडिट की पढ़ाई चालू की है देन यू मस्ट हैव आइडेंटिफाइड कि चैप्टर 4 जो है उसका ये टेस्ट था. सो आई एम यूजिंग दिस एज एन एग्जाम्पल. सो इसमें क्वेश्चन क्या था कि द लेवल ऑफ सैम्पलिंग रिस्क दैट ऑडिटर इज विलिंग टू accept affects the sample size. So basically the question was ki how would you determine the sample size for so what factors the auditor needs to consider while determining the sample size for test of control. So इसमें I have written point wise answers. The greater the reliance auditor pays, larger will be the sample size, so on. The larger the rate is the tolerable rate of deviation. So यहाँ पे दो points है. So one point is the larger the tolerable rate of deviation, the sample size will be small. And another point is with the increase in the expected rate of deviation, the auditor will have to check larger sample. So इसमें as you can see कि because इन दोनों points का meaning एकदम opposite और different निकल रहा है. So यहाँ पे a larger अभी अभी जब tolerable rate of deviation is more, then the sample size will be small. So you just need to मेक द पेपर चेकर अंडरस्टैंड कि आपको ये पॉइंट समझ गया है. सो फॉर दैट लार्जर की जगह अब यू कैन यूज एनी वर्ड लाइक मोर, ग्रेटर और लार्जर, और विद दैट वोंट बी अ डिफरेंस. बट टॉलरेबल रेट ऑफ डिविएशन के लिए यू कांट यूज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविएशन बिकॉज दैट विल ओनली मेक इट्स मीनिंग completely opposite. और expected rate के लिए you cannot use any other word. Even if you use any synonymous words like anticipated or any such thing, I think it would always be better to use expected rate of deviation as it is and tolerable rate of deviation as it is, because that is the main keyword in the whole sentence, and that is जिसके आप अभी small की जगह you can use less or whatever you want to, but you can't change the meaning. And so this is a keyword. So that is what a keyword works and how this subject works. And so यही छोटी छोटी चीजें होती है that would make a difference. Obviously, I'm not saying कि पता नहीं है. Everybody knows कि what is keywords and everybody has a vague idea about what the paper checker is expecting. But sometimes the volume, because of the sheer volume of the subject and the things that you have to memorize, so we get afraid. We get afraid, and sometimes we lose sight of what matters and what does not matter. So हमें हमारा effort जो है right direction में, we can't, obviously we won't be able to memorize each and every word and put it as it is. So that is where we have to focus all our effort on keywords, and उसी हिसाब से हमें strategy भी उस हिसाब से ही बनानी पड़ेगी. So जहाँ पे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिखाया ऑफ माई टेस्ट पेपर. सो अनदर क्वेश्चन वाज आल्सो कि आपने कहाँ से कोचिंग ली थी एंड हु वाज योर फैकल्टी. सो इसमें मैं आपको बताना चाहूँगी दैट आई टुक ऑल माय सब्जेक्ट्स फॉर सीए इंटर फ्रॉम पैनोरामिक एजुकेशन, वहाँ से ही मैं सीए फाइनल भी कर रही हूँ. सो उसका यूट्यूब पेज का लिंक ऑल्सो आई एम पुटिंग इट इन द डिस्क्रिप्शन. सो माई ऑडिट की फैकल्टी वॉज पायल मैम. सो उनके यूट्यूब पेज पे यू कैन गो एंड सी देयर ऑडिट demo lectures, and if you like, obviously you can join. So my experience there was very good. uh, so going to the next point is presentation. Obviously presentation is very very important because अगर आपको सब कुछ अच्छे से आता है, even if you are not able to present it properly, then it is of no use. So for presentation also मैंने जो मेरा certified copy analysis का video डाला है, you can refer to that. वहाँ पे मैंने छोटी छोटी टिप्स बताई है जिससे आपको बोनस पॉइंट्स, ब्राउनी मार्क्स मिल सकते हैं. सो द मेन issue here is कि photographic memory रहना obviously it's not necessary. All you have to do is conceptual clarity, especially अब because audit में MCQs आ गए. So concept, anybody who has good hold on concepts will definitely win. You have to target scoring 30 on 30 on MCQs. The easiest part of scoring high in audit is MCQ. ऐसा बोल भी सकते हैं और ऐसा नहीं भी बोल सकते हैं because definitely MCQ में score करना easy है if you have strong concept, but also
इफ आप किसी ऐसी स्ट्रैटेजी से पढ़ रहे हैं दैट आई एम ओनली स्टडिंग स्पेसिफिक चैप्टर्स या आई एम ओनली स्टडिंग important क्वेश्चंस या high weighted chapters, so that strategy can backfire especially when you are going to MCQs because MCQs में वो किसी भी कोने में लेस important topics पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस बना सकते हैं. So for that strategy also you have to see how you are working that out for MCQ part. So another question that I'm going to cover here is study material. What kind of study material that you use? Obviously, ICI module is a king that everybody knows by now. So ICI module को at least first time पे जब आप syllabus cover करो then you have to cover everything from ICI module. And revision में especially the day before exam you can't go through the entire ICI module, so you have to use notes. But जो notes की language होनी चाहिए 90 to 95% it should be based on ICI because that is what is going to end up giving you good score. So the notes that you're using should also be mostly based on ICI and RTP, MTP, PYQ. In my opinion, audit में RTP, MTP, PYQ is as good as I don't think it is of any good use because ICI मॉड्यूल के ही ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस आर अल्टीमेटली कवर्ड पीवाईक्यू में भी एमटीपी पे भी आरटीपी पे भी. तो इट्स बेटर कि आप एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू करके खुश हो रहे हो, इससे बेटर आप मॉड्यूल में एक दो क्वेश्चंस और एक दो एक्स्ट्रा कोने कोने के टॉपिक पढ़ लो बिकॉज एमटीपी आरटीपी पीवाईक्यू में you are only going to find those same repeat questions unless आपकी ऐसी स्ट्रैटेजी है कि मैं कोई ट्रेंड ढूंढ लूंगी एमटीपी आरटीपी में जिससे मेरे को एकदम ए बी सी कैटेगरी के क्वेश्चंस मिल जाएंगे विच आई डोंट थिंक देयर इज एनी सच थिंग इन ऑडिट. सो आई थिंक कि आरटीपी एमटीपी इज बेटर फॉर अदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट जैसे कि कॉस्टिंग अकाउंट्स जहाँ पे आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे बट फॉर ऑडिट आई डोंट थिंक दैट्स ऑफ एनी यूज. So moving up to the next part, one bonus tip I was going to say, yep. So somebody asked me in the comment that day कि आप जोर जोर से बोल के पढ़ते हो या शांति से पढ़ते हो. देखो भाई, मेरा तो सिंपल फंडा है कि अगर मैं चुपचाप पढ़ने बैठूं तो आई एम अनेबल टू मेमोराइज एनीथिंग. सो आई हैव टू लर्न एनीथिंग. तो मैं जोर जोर से पढ़ के बोलता हूँ. अभी मैनी पीपल क्रिटिसाइज दिस स्टाइल of learning, but yeah, it helps me retain at least. And what I feel is that जब आप जोर जोर से बोल के पढ़ते हो तो it helps you cancel out the surrounding noise and it helps you to make that complete focus. And one more advantage is कि एक बार जब आप बोल के पढ़ते हो so इट्स लाइक दो बार आपका रिवाइज हो रहा है. एक बार जब आप बोल रहे हो एंड सेकेंड टाइम जब आप खुद को सुन रहे हो. सो एक बार में यू कैन रिवाइज ट्वाइस. सो व्हाई नॉट. सो अगर आपको ऐसा बोल के पढ़ने की आदत है तो गो अहेड. आई डोंट थिंक देयर इज एनी प्रॉब्लम इन बोल के पढ़ना या बिना बोल के पढ़ना. या दैट्स अ पर्सनल चॉइस बट मेरे एक्सपीरियंस आई वुड सजेस्ट कि बोल के पढ़ना इज बेटर फॉर अटेंशन फ्रॉम व्हाट आई नो. So these were all the questions that I could remember and I tried to cover. But इसके अलावा भी if आपके कोई questions है, so obviously you can put them in the comment section and I would be more than happy to make part 2.